Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Hello everyone, welcome to my channel. I hope you are doing good. So in today's video you already know by the title that we are going to talk about face serums. So I have tried a few serums from past 1.5 year. I have some views or opinions about them, so I am going to tell you about those. Also, I know it is very difficult to choose a perfect serum for your skin type. So I am going to tell you how you can choose a perfect serum for your skin type, and this video is going to be very informative, and I am going to show you a few serums that I have used, and I am going to help you in how you can choose a perfect serum for your skin type and your skin concern. Also, before starting this video, I want to give you a disclaimer that before using any face product, always do a patch test, see if it will suit you or not. देयर माइट बी अ चांसेस उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपकी स्किन को हार्म कर सके, या फिर आपकी स्किन उससे एलर्जिक हो जो आपको नहीं पता हो. So definitely do a patch test. And secondly, before buying anything by someone else's recommendation, try to buy the smallest version of that particular product, because there are chances that might not suit you. हो सकता है कि जो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से सूट कर रही हो वो आपको उतने अच्छे से सूट ना करे. So definitely go for the smallest version. So yes, without wasting any more time, let's just start the video. So before showing all the serums that I have used and giving my opinions about them, I would tell you a little bit that how you can choose a perfect serum for your skin type. So before choosing any serum or even a moisturizer, always see what skin type you have. If you have a oily skin or a combination skin or a dry skin. So there are a few products that might not suit acne prone skin, and there might be a few products जो thick होते हैं consistency में, and they might not go well with the oily skin. Before buying any moisturizer or serum, do check whether you have an oily skin or a dry skin or a combination. My skin type is combination skin type. Now combination skin is T-zone is oily और जो बाकी होता है वो normal skin type होती है. Other than that, कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव स्किन भी होती है. दे शुड यूज दी प्रोडक्ट्स जो स्किन पर हार्श ना जाएं, या फिर मैं यूं कहूँ कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो स्किन के लिए. सो द सेकेंड कैटेगरी टू चूज अ सीरम और अ मॉइस्चराइजर इज टू नो योर स्किन कंसर्न्स. यू माइट हैव डल स्किन, और हो सकता है कि यू माइट हैव डार्क सर्कल एज योर मेन कंसर्न, अंडर आई डार्क सर्कल्स, or there are chances that you have dark spots or hyperpigmentation. There are a lot of skin concerns. So always check your skin concern, what skin concern you have, or what are the main skin concerns that you want to work on for your skin. So yes, whenever you buy a product, check their description of product कि उसमें आपके skin concerns की कितनी importance है, and how much that product gonna contribute to your skin concerns. So yes, these are the main two criteria जो आपके लिए important हैं. So yes, इतना ही था main information जो मुझे आप लोगों को देनी थी. Now moving towards the serums that I have used. So we will start with the most affordable ones towards the most expensive serum that I have owned. So yes, let's start with our first serum. This is the L'Oreal Revitalift 1.5% hyaluronic acid serum. Now the quantity of this serum is 15 ml and the price that it comes for is 499 rupees. And you can always get all these serums and products with some offers. Now as it says, it has 1.5% of hyaluronic acid. Hyaluronic acid जो होता है वो fine lines और skin tissues को redevelop करने में help करता है. So yes, if you have problem with fine lines on your face, or you are in your late 20s, then you can try this serum. But मेरा जो main skin concern था वो fine lines वगैरह नहीं था, so I can't really tell you about that, but I can share you my experience with it. Now consistency wise, it has very thin consistency and a lightweight serum. You just need 2 to 3 drops on your face and that will be enough. Now if you talk about skin types, it is thin in consistency but it is very moisturizing, because obviously it has hyaluronic acid which helps in locking the moisturizer and hydrating your skin. So that's why it is good for oily skin, dry skin and combination. Basically for all skin types it is good.
I can't really say about sensitive skin people, but my skin is not sensitive, so I can't really say about that. And the best part is it actually makes your skin look more plumper, and it actually locks hydration in your skin. So if you want, then you can try this serum. इससे मुझे as such कोई harm या फिर कोई problem नहीं हुई है. Now next up we have Lotus Herbal White Glow Intensive Skin Whitening and Brightening Serum. Now I know whitening is a very controversial term. Now to be honest, I don't believe in skin whitening, but I definitely think that if your skin is already fair and it looks dull or tanned, then definitely you should use these kind of products. Now talking about this product. Now talking about the quantity, it comes with 30 ml product, and with that the price is 455 rupees. Now again you can find it on sale always on Nykaa. Now to be very honest, it really suited my skin, और मेरे जो भी मेन कंसर्न्स थे उसमें इसने कंट्रीब्यूट किया है डेफिनेटली, बिकॉज आई स्टिल हैव अ लिटिल डल स्किन, और मेरी स्किन बहुत जल्दी डल हो जाती है. लाइक अगर मैं कुछ दिन भी अपने स्किन केयर ना करूँ तो मेरी स्किन डल हो जाती है. So for that, when I used to use this serum, it really helped in my skin looking more glowing and brightened. So it will help you with that. Now when we talk about the product जो skin whitening में use होते हैं, I take it as जो आपकी real skin tone होती है उसको और justify करता है. would say अगर आपकी skin tanned है या फिर डैमेज्ड है और पॉल्यूशन वगैरह की वजह से आपकी स्किन काफ़ी डल या फिर अपनी फेयरनेस या फिर जो भी आपका स्किन टोन है वो खो चुकी है. सो इट हेल्प इन गेटिंग दैट स्किन आउट. Now it says that it is suitable for all skin types, and actually I think it might suit all the skin types, because for sensitive skin I think again it might suit you, because ये बिल्कुल भी harsh नहीं है, and also the consistency wise it is not very thin and not at all thick, like it is a little thin. So overall it was good and it evened down your skin, that is for sure. So if your main concern for skin is uneven skin tone or dark spots, I think it will help you in that, and it will give you a healthy looking skin. So the next serum that we have is from M Caffeine, and it is M Caffeine Naked Detox Green Tea Face Serum, and it comes with 40 ml of product, and the price for it is 625 rupees. Now first of all, if you are wondering why I am looking down, I have wrote down about the price and the name of the product, because वो याद नहीं रहते हैं पूरे नाम और प्राइस वगैरह. Now talking about this serum, it is soothing and calming, gives your skin a calming effect. अगर आपकी स्किन सन डैमेज्ड है या फिर इरिटेशन या इचीनेस है तो ये उसमें डेफिनेटली हेल्प करता है. Also we all know that green tea has a calming effect. Also we know कि green tea acne के लिए काफी useful होती है. Honestly when I use this serum मेरी skin breakout नहीं की, so that's a plus point. Now I am not sure कि वो इस serum की वजह से हुआ या फिर generally भी, but usually कभी कभी मेरी skin breakout कर जाती है, but during that period when I used this product मेरी skin breakout बिल्कुल नहीं करी है. It has a lightweight formula and it is not at all sticky. And now moving on to our next product, it is M Caffeine Naked and Raw Coffee Face Serum, and again the quantity is 40 ml and the price is 645. Honestly I have a little neutral opinion about it, to be honest, because I have used this serum during winter. So obviously winter के time पे skin थोड़ी बहुत dry हो जाती है, and from the cheek area मेरी थोड़ी बहुत skin dry हो जाती है. So for that, if you have dry skin, I think you can try this serum. एंड ड्यूरिंग विंटर्स ऑल्सो अगर आपकी ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप ये विंटर में ट्राई करो तो ही बेटर होगा, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल थिक इन कंसिस्टेंसी एंड अ लिटिल वेरी लिटिल स्टिकी, बट वो कुछ टाइम बाद एब्जॉर्ब हो जाता है एंड थोड़ी देर के लिए आपकी स्किन को थोड़ा डार्क भी छोड़ सकता है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द सीरम. बट अदर देन अ गुड मॉइस्चराइजर एंड हाइड्रेशन, आई डोंट थिंक इस सीरम ने ऐसे कुछ वंडर्स किए हैं मेरी स्किन पे. So yes, if you have dry skin and you want to try this serum, I think अगर आप फिर भी इस सीरम को ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई दिस ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि विंटर में ये बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि इससे बिल्कुल भी स्किन ड्राई नहीं होती है. बट अदर देन दैट आई डिडंट रियली फेल्ट एनी डिफरेंस टू माई स्किन. सो येस, मतलब जो मेरे मेन स्किन कंसर्न थे उसके हिसाब से
it is not that up to the mark, but yes, if you have a dry skin, a flaky skin, then you can try this serum. You can see whether if it suits you or not. And now moving on to our next serum, which is again from Lotus. Now this is Lotus Professional Serum, and it says Phyto Reaction Whitening and Brightening Serum. Now it claims to be preservative free, free from artificial fragrance and color. Now to be very honest, इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आती तो है, बट अगर इन लोगों ने क्लेम किया है कि वो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है, तो अगर ये इनकी नेचुरल फ्रेग्रेंस है तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छी है. एंड इस सीरम का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो इसको बंद और क्लोज करने का था. दैट यू कैन सी, यहाँ से उठा हुआ है एंड नाउ इट इज क्लोज्ड. ऐसे ही क्लोज हो जाएगा. एंड व्हेन यू हैव टू यूज इट, you just have to take this out and press it, and सीरम जो है वो इसमें आ जाएगा. एंड यहाँ से you can again take the serum out. Now काफ़ी इनोवेटिव है, एंड टू बी ऑनेस्ट ये मुझे अगेन लोटस का एक और सीरम जो मुझे काफ़ी अच्छे से सूट किया है. नाउ आई नो अगेन इट सेज वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग, बट टू बी ऑनेस्ट ब्राइटनिंग वाइज इट इज़ रियली गुड, एब्सोल्युटली गुड प्रोडक्ट, and it really actually makes the skin look more brightened and glowy. If your skin concern is dullness, then I think this serum will suit you. Now the quantity of this product is 30 ml and the price is 675 rupees. It will suit all the skin types. ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन को बहुत थिक या फिर स्वेटी लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बिल्कुल भी इससे ऑयलीनेस नहीं आती है फेस पे. इवन इससे काफ़ी ना पोर्स भी फिल हो जाते हैं, एंड इट एक्चुअली गिव्स दैट हेल्दी ग्लो. सो येस, आई थिंक आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, एंड सो फार इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट serums of all. Now finally moving on to our last serum, which is from Innisfree, and it is Innisfree Green Tea Seed Serum. Now it comes with this cap, and the best part is कि ये इससे छोटे साइज में भी आता है. आई डोंट नो, जब मैंने ये खरीदा तब तो उस टाइम पे नहीं था, बट राइट नाउ इसका एक मिनी वर्जन आया हुआ है विच इज़ ऑफ 30 ml, एंड दिस वन विच आई हैव इज ऑफ 80 ml. नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग आई रियली लाइक दिस सीरम, क्योंकि आई हैव बीन यूजिंग इट जस्ट फॉर अराउंड 20 to 30 days. तो सो उतने टाइम के एक्सपीरियंस से अगर बोलूँ तो आई रियली लाइक दिस सीरम. आई थिंक आई डोंट थिंक ये बहुत ब्राइटनिंग और ग्लोई इफेक्ट देता है, मतलब ग्लोई थोड़ी बहुत देता है, बट नॉट वेरी ब्राइटनिंग इफेक्ट. बट टू बी ऑनेस्ट इट गिव्स अ प्लम्पर स्किन, and it really makes your skin looks and feels soft and smooth, and it claims to be non-comedogenic, and for this serum only one pump would be enough. मतलब one pump में जितना ही प्रोडक्ट आता है वो आपके पूरे फेस के लिए इनफ रहेगा, and it gets absorbed very well to your skin. So yes, I think it is a really good serum. And now talking about the price, the mini version of it is for 850 rupees, and this 80 ml version is for 1950 rupees. Now if you can afford this, only then go for it. If you can't really afford itna, if you don't want to invest itna 1950 rupees, almost 2000 rupees to a serum, then it's okay. जो मैंने पहले सीरम बताए हैं, you can try to research on them and see if any of them can suit you. So yes, this is it for today's video. These are all the face serums that I have tried till now. I really hope you found this video helpful and informative, and if you did, then do not forget to give this video a big thumbs up. Also share this video. Also do not forget to subscribe to my channel and hit that bell icon with it too, so that next time I upload a video you will get notified, and I shall see you in my next video. Until then, stay tuned and bye bye.